Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Evening everyone. Evening. Evening रख लेते हैं 4 बज गए है ना चल गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम ठीक है कल किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वी हैड टू एंड आवर सेशन देयर एंड देयर नाउ आज हम उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे इन अ वे कि आज हम प्राइमरली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है क्योंकि मैंने ये चीज आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन कर दी थी दैट व्हेन इट कम्स टू योर ओलेट एग्जामिनेशन प्राइमरली आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही दिखेंगे आपके पेपर्स में ठीक है तो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ठीक है आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज अराउंड मोर देन 250 प्लस ठीक है 250 प्लस number of questions we'll be solving today and these questions will test your knowledge, that is the retention of your static laws. Along with that, these particular questions will test your conceptual clarity as well, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इन दोनों ही पैटर्न पे वहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है तो आज के जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है दोस क्वेश्चंस विल बी प्राइमरली कवरिंग योर स्टैटिक लॉज, that is criminal torts and contracts. Along with that, there are certain questions based on your constitution as well. कॉन्स्टिट्यूशन के आज हम उन पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम प्राइमरली इग्नोर करते हुए चलते हैं इन द सेंस कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो प्रॉपरली ढंग से पढ़ोगे है ना उसके साथ साथ आप पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो सारी चीजें तो आप प्रॉपरली पढ़ रहे होते हो बट जनरली द अवॉइडेड पोर्शन इज जैसे आप लोग लेजिस्लेचर रिलेटेड टॉपिक्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे होते हो and along with that the different types of bodies which are associated with the governance of our country इनको भी हम इग्नोर करते हुए चलते हैं तो इन सारी चीजों से रिलेटेड along with सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे आज क्वेश्चंस होंगे ठीक है शुरू करें फिर चैतन्य द चांसेस आर हाई बेटा जितना आप स्कोर बता रहे हो उस हिसाब से ठीक है बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तो बाकी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने में प्रॉब्लम है क्या ठीक है शुरू करें फिर हाँ जी शैल वी स्टार्ट चल तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन so the first question in front of you is which of the following statement is correct regarding the Rajya Sabha ठीक है क्वेश्चन क्या है कि which of the following is correct regarding Rajya Sabha A it is a directly elected body B it is a temporary house C the vice president of India is its ex officio chairman and D it cannot initiate a money bill हाँ जी what's the correct answer first का correct answer is the correct answer over here is देखो the answer is option C ठीक है that the vice president of India is actually its ex officio chairman इट इज नॉट अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ठीक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके राज्यसभा के इलेक्शंस में वोट करते हैं इट इज नॉट अ टेम्पररी हाउस इट इज अ परमानेंट हाउस ठीक है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन दो हाउसेज हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा तो हर 5 साल के बाद फ्रेशली रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस है ना एंड इट कैन नॉट इनिशिएट मनी बिल दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा मनी बिल्स को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो ठीक है सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी ठीक है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना अलाउड है ए 3 months बी 6 months सी 9 months एंड डी 12 months हाँ जी व्हाट्स द करेक्ट आंसर what is the maximum gap allowed between two sessions of the parliament Anji so the maximum gap which is allowed between two sessions of the parliament is 6 months ठीक है हमारी पार्लियामेंट 3 सेशंस में मिलती है and the 3 sessions of the parliament are basically budget monsoon and winter session
बट ये बजट, मानसून और विंटर सेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ये दोनों हाउसेस ने अपने रूल्स ऑफ कंडक्ट को मैनेज करने के लिए वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो मैक्सिमम गैप है which can take place within the two sessions of the parliament is of 6 months, ठीक है। चलो let's move to the next one. So the third question is, which of the following is not a qualification required to be a member of Lok Sabha? Which of the following is not a qualification required to be a member of Lok Sabha? A, must be a citizen of India. B, must be at least 25 years old. C, must be a member of a recognized political party. And D, must not hold any office of profit under the government. Hanji, what's the correct answer in question number 3? Third में correct answer क्या है भाई? The correct answer is correct. Correct, everyone. So he must be a member of a recognized political party. This is not a requirement for or a valid requirement for being a member of Lok Sabha. आप इंडिपेंडेंटली भी तो चुनाव लड़ सकते हो ना, तो आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना जरूरी तो नहीं है। So the correct answer over here was option C, beta. ठीक है? Now the next question is, which article of the Indian Constitution provides for the composition of legislative assembly in the states? ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि which of the following article of the Indian Constitution provides for the composition of legislative assembly in the states? A, Article 168, B, Article 170, C, Article 172, and D, Article 174. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? क्या करेक्ट आंसर है भाई? So the article of the Indian Constitution which provides for the composition of legislative assembly in the states is option B. It is Article 170 of the Constitution of India. ठीक है, 168 में given नहीं है बेटा. That particular thing is given under Article 170 of the Constitution of India. ठीक है, चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, a money bill can be introduced only in the Lok Sabha with the prior recommendation of whom? Money bill can be introduced in the Lok Sabha with the prior recommendation of whom? A, the Prime Minister, B, the Speaker of Lok Sabha, C, the President of India, and D, the Finance Minister. Hanji, what's the correct answer? सारे आर्टिकल्स तो नहीं बेटा, बट हाँ इंपॉर्टेंट वंस तो आपको कवर करने पड़ जाते हैं। हाँ जी, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ whom? So it is the President of India. देखो, there are certain bills given in our constitution which can be introduced in the house only with the recommendation of president. अब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होने वाले जो बिल है आपके, these include money bills and state reorganization bill as well. ये वो बिल्स हैं जो आप हाउस में इंट्रोड्यूस तो कर सकते हो, बट दीज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स? ठीक है, which house of the parliament is considered as the house of elders? A, Lok Sabha, B, Rajya Sabha, C, Legislative Assembly, or D, none of the above? हाँ जी, A, Lok Sabha, B, Rajya Sabha, C, Legislative Assembly, and D, none of the above. What's the correct answer? Which house is known as the house of elders? Correct. It is Rajya Sabha. देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी बुलाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा इज नोन एज
upper house, council of states, and house of elders. ठीक है, ये अलग अलग नाम है आपके. ठीक है, चलो, let's move to the next one. Now the next question is, in case of a deadlock between the two houses of the parliament over an ordinary bill, who has the authority to summon a joint sitting of the parliament? ठीक है, in case of a deadlock between two houses over passing of an ordinary bill, then who has the authority to summon the joint sitting? A, prime minister of India, B, the speaker of Lok Sabha, C, the president of India, or D, the chief justice of India? हाँ जी, who summons the joint sitting of the parliament in such a situation? Speaker? सबको स्पीकर लग रहा है? ठीक है, देखो, this thing is something which is governed by article 108 of the constitution of India. Always remember, who is responsible for summoning the house? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हाउस को या पार्लियामेंट को समन करने की पावर किसको दी है हमने? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस को दी है क्या हमने? नहीं ना. When it comes to the constitution of India, the power to summon the session of the house has been given to the head of the state. Head of the state, that is the president of India. Yes or no? है ना? President is authorized to summon the session of the parliament. Yes or no? अब भले ही joint sitting की बात हो, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है that in case of a deadlock between the two houses of the parliament regarding passage of certain bill, then the president of India is authorized to summon the joint sitting of the parliament. ठीक है, joint sitting बुलाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है. पॉइंट ये है उस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? सो जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. बट जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर, ठीक है, जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. ठीक है, क्लियर है everyone? Clear? Chalo, let's move to the next one. Now the next question is, which of the following states in India has a bicameral legislature? Which of the following states in India has a bicameral legislature? हमारी कंट्री में bicameral legislature किस किस के पास है? A, राजस्थान, B, तमिलनाडु, ठीक है, C, महाराष्ट्र, and D, हरियाणा. What's the correct answer? हाँ जी, which of the following states in India has a bicameral legislature? A, B, C or D? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, और कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास. देखो, so legislatures are primarily divided into two categories. Yes or no? There are unicameral legislatures and then there are bicameral legislature. अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ भाई. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर? तो देखो, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है दैट देयर इज अ सिंगल हाउस, है ना? एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है दैट देयर आर टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. तो सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे तो हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है. यस और नो? है ना? सेंट्रल लेवल पे तो हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर को अडॉप्ट किया है बिकॉज वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा. बट जब स्टेट्स के लेवल पे हम कहते हैं ना, तो स्टेट्स के लेवल पे इंडिया ने एक मिक्स फॉर्मेट को यूटिलाइज किया है. majority of the states in this country have a single majority of the states in this country have a unicameral legislature. Yes or no? Most of the states में हमारी कंट्री में unicameral legislature आपको देखने के लिए मिलेगा. But there are certain states in our country जहां पर bicameral legislature भी है.
and those states are Antu Bamak. ठीक है? There are 6 states in our country. ठीक है? There are 6 states in our country जहां पर आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने के लिए मिलेगा. दैट इज आंतु बमाक, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. ठीक है? आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. दीज आर द 6 states जहां पर हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का? So the correct answer to this particular question will be, which of the following states in India is having a bicameral legislature? So that is Maharashtra. ठीक है? Clear? Everyone? Clear? चल. Let's move to the next one. चल. Next question solve करो. So the next question is, under which circumstances can the parliament legislate on subjects listed in the state list? ठीक है? Under which circumstances the parliament can legislate on the subjects mentioned in the state list? A, when the president issues an ordinance. B, when the state requires or requests the parliament to do so. C, when the Supreme Court directs it. And D, when an emergency is declared under Article 352, 356 or 360. हाँ जी. What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 9 में? 9th का करेक्ट आंसर इज correct, correct, very good. So the parliament can legislate on the subjects mentioned in the state list during this situation, that is when an emergency is declared under article 352, 356 and article 360. ठीक है? So the correct answer over here was option D. चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, the quorum required to hold a session of the Lok Sabha or Rajya Sabha is what? The quorum required to hold the session of Lok Sabha or Rajya Sabha is what? A, 1/4 of the total members. B, 1/5 of the total members. C, 1/3 of the total members. And D, 1/10 of the total members. Hanji, what's the correct answer? What's the quorum which is required to conduct the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha? Hanji, करेक्ट आंसर इज, देखो, जब कोरम की बात करते हैं ना हम, तो कोरम की सिचुएशन में कोरम बेसिकली रेफर्स टू द मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू validly conduct the proceedings. ठीक है? Quorum basically refers to the minimum strength which is required to validly conduct the proceedings. उसको उस minimum strength को हम quorum कहते हैं. And the quorum in case of Lok Sabha and Rajya Sabha is 1/10 of the total membership of the house. ठीक है? The quorum which is required in case of Lok Sabha and Rajya Sabha is 1/10 of the total membership of the house. पूर्वी उस सिचुएशन में जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स राज्यसभा को अप्रोच करते हैं या पार्लियामेंट को अप्रोच करते हैं तब अलाउ किया जाता है. सिंगल स्टेट के कहने पे वो चीज नहीं होती. ठीक है? ठीक. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Now, which committee examines the legality of government expenditures in India? ठीक है? The question is, which committee examines the legality of government expenditure in India? A, Public Accounts Committee. B, Estimates Committee. C, Committee on Public Undertakings. Or D, Business Advisory Committee. ठीक है? हाँ जी. What's the correct answer? Which committee examines the legality of the government expenditure in our country? A, B, C or D? एक करेक्ट आंसर आया यहां पर. ठीक है?
the correct answer over here is option A, that is Public Accounts Committee. ठीक है? The correct answer over here is option A, that is Public Accounts Committee. कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का ये काम नहीं है बेटा. पब्लिक अंडरटेकिंग्स तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से रिलेटेड है. उनका काम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वर्किंग, उनके बिजनेस, उनके उनके एक्सपेंडिचर्स को रेगुलेट करना. जब एंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अपन बात करते हैं, ठीक है, जब एंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अपन बात करते हैं ना, तो दैट इज समथिंग विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which house of the parliament has special power under article 249 to empower the union to legislate on a state list subject. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि which house of the parliament has a special power under article 249 to empower the union to legislate on the state subject. A, Lok Sabha, B, Rajya Sabha, C, both houses jointly, or D, neither house has such a power. हाँ जी, what's the correct answer in question number 12th? Hmm. What's the correct answer? करेक्ट. देखो, आर्टिकल 249 बेसिकली राज्यसभा के पास ये पावर देता है that Rajya Sabha by passing a special resolution can empower the parliament so that the parliament can legislate on the matters mentioned in the state list. ठीक है, so the correct answer in question number 12 was option B, that is Rajya Sabha. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is which of the following statement is not correct regarding money bills. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि which of the following statements is not correct regarding money bills. A, Rajya Sabha can delay a money bill for a maximum of 14 days. B, the Speaker of the Lok Sabha has final authority to decide whether a bill is money bill or not. C, the President can return a money bill for reconsideration. And D, money bills must be introduced in Lok Sabha only. हाँ जी, which of the following statement is incorrect with respect to money bill? What's the correct answer, guys, in question number 13? 13th में correct answer is 13th में correct answer is बेटा option C. देखो, पूछा किया गया है which of the following is not correct regarding money bills. ठीक है, not correct पूछा गया है. अब मनी बिल्स की जब हम बात करते हैं तो मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. पहली चीज, पहला पॉइंट याद रखना. ठीक है, मनी बिल्स आर बेसिकली इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, दैट सर्टिफिकेशन इज डन by the Speaker of Lok Sabha. ठीक है, whether the bill is money bill or not, that certification is done by the Speaker of Lok Sabha. और बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होगा. लोकसभा जब राज्यसभा के पास बिल पास करता है, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है. उसमें चाहे तो बिल को एक्सेप्ट कर ले, चाहे कोई एक्शन ना ले, बट 14 दिन के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली राज्यसभा से पास हो चुका है, ये मान लिया जाता है. ठीक है, बट पॉइंट ये है कि जब प्रेसिडेंट की हम वीटो पावर की बात करते हैं, नाउ वन ऑफ द पावर विच इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज वीटो पावर इज दैट ही कैन एक्चुअली रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस. यस और नो, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, है ना. प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है दैट प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, विच इज नोन एज द वीटो पावर और सस्पेंसिव वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट. बट व्हेन इट कम्स टू मनी बिल को रिटर्न करने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है. आइदर ही कैन गिव हिज असेंट और ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट, बट ही इज नॉट अलाउड टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस. So the incorrect statement over here was option C, that president can't return a bill for reconsideration of the house. This is not correct with respect to the money bill. ठीक है, क्लियर है, समझ में आया भाई? Clear everyone? चल, let's move to the next one. Now the next question is which article of the Indian Constitution provides for the establishment of legislative councils
in a state. ठीक है? The question is, which article of the Indian Constitution provides for the establishment of legislative council in a state? A. Article 168, B. Article 169, C. Article 170, and D. Article 171. What's the correct answer in question number 14th? हाँ जी, 14th में करेक्ट आंसर क्या है भाई? Good job, nice, very good. So, the article of the Indian Constitution which provides for the establishment of a legislative council in a state is option A, beta. That is Article 168 of the Constitution of India. ठीक है? जहां जहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करने की जो बात है, वो आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है. ठीक है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which constitutional provision ensures the accountability of the executive to the legislature? ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि which constitutional provision ensures the accountability of the legislature towards the executive? A. Article 75, B. Article 110, C. Article 121, and D. Article 326. What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 15 में? हाँ जी, 15th का करेक्ट आंसर इज करेक्ट. देखो, है क्या? वी हैव अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यस और नो? है ना? वी हैव अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब जब हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. यस और नो? अ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री. है ना? दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करता है? आपने सुना होगा ना, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज collectively responsible. The council of minister is collectively responsible to the lower house of the parliament. Yes or no? ये चीज आपने जरूर पढ़ी होगी. इसी वजह से तो हम कहते हैं that we have a responsible or accountable form of government in our country. Because the constitution provides that the entire council of ministers is collectively responsible towards the lower house of the parliament or to the Lok Sabha. And ये चीज कौन से आर्टिकल में given है? That is something which is given under Article 75 of the Constitution of India. ठीक है? Clear? ठीक? चलो, let's move to the next one. That article in itself is considered as something which is responsible for the establishment of legislative councils in the state, beta. ठीक है? Eventually, the legislative councils will be created on the resolution passed by the parliament to that effect. But why parliament will get involved for the establishment of legislative council in the state? That in itself becomes the reason or the background according to which the legislative councils are established in a particular state. ठीक है? चलो. Now the next question is, which schedule of the Indian Constitution contains the provisions regarding the disqualification of member of parliament and state legislatures on the ground of defection? Which schedule of the Indian Constitution is responsible for the ground of defection? हाँ जी, defection कहाँ given है भाई? Correct. Defection is something which is given under 10th schedule of the Constitution of India. अब जल्दी से मुझे चार्ट बॉक्स में बताओ, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब ऐड हुआ था और किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 10th शेड्यूल को? हाँ जी, 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. ठीक है? It was the 52nd Constitution Amendment Act of 1985 which led to the enactment of the provisions of
डिफेक्शन इन आवर कंट्री थ्रू द 10th शेड्यूल। ठीक है, करेक्ट बेटा, करेक्ट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाँ जी, which house of the parliament has the power to recommend, ठीक है, the removal of judge of the supreme court or high court? A, only lok sabha, B, only rajya sabha, C, both houses separately, or D, both houses jointly in a session? What's the correct answer? हाँ जी, 17th का करेक्ट आंसर इज 17th का करेक्ट आंसर इज जॉइंटली नहीं बेटा। The removal resolution of the impeachment of a judge of a Supreme Court or High Court. The removal resolution of the judge of the Supreme Court or the High Court is required to be passed by both houses separately. Jointly नहीं करना है वो, separately होना चाहिए, and therefore correct answer was option C. ठीक है, जॉइंटली थोड़ी ना वो रेजोल्यूशन पास होता है, पहले एक हाउस पास करेगा, दूसरा हाउस को भेजेगा, दूसरा हाउस पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर पास करेंगे, है ना? So the correct answer over here was option C. ठीक, clear everyone? चल, let's move to the next one. Now the next question is which of the following motions is not a tool for parliamentary control over the executive? Which of the following is not a tool for parliamentary control over the executive? A, cut motion, B, censure motion, C, confidence motion, and D, none of the above. What's the correct answer in question number 18th? हाँ जी, 18th में करेक्ट आंसर क्या है गाइस? देखो चलो, जिन्हें नहीं पता, कट मोशन इज बेसिकली यूज्ड ड्यूरिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, जब भी बजट रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा होता है, तो बजट में अगर किसी चीज को, ठीक है, बजट में अगर किसी चीज का एक्सपेंडिचर कम करने के लिए ऑपोजिशन को कोई मोशन यूटिलाइज करना होता है ना, तो दैट इज कट मोशन। एंड कट मोशन बेसिकली शोज कि भाई ऑपोजिशन का गवर्नमेंट पे ज्यादा कुछ भरोसा नहीं है। सेंसर मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को या इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके एक्शंस को कहना चाहिए एक तरीके से डिसअप्रूव करने के लिए जो मोशन यूटिलाइज होता है, दैट्स सेंसर मोशन। तो ये दोनों तो एक तरीके से पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ही मैकेनिज्म है। कॉन्फिडेंस मोशन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और कॉन्फिडेंस मोशन अगर है भी तो वो आप गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आपका गवर्नमेंट में ये शो करने के लिए यूज कर रहे हो। वो जो मोशन जो गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूज किया जाता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है ना, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट अ टूल फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? A, it is presided over by the Speaker of Lok Sabha. B, it is summoned by the President under Article 108. C, it can be used to resolve deadlocks over constitution amendment bills. And D, it is meant to resolve disagreement between the houses over an ordinary bill. Hanji, what's the correct answer in question number 19th? 19th में correct answer क्या है भाई? अरे यार, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ये तो डिस्कस ही किया हम लोगों ने टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यस और नो, ये तो अभी डिस्कस हुआ था। पॉइंट क्या है? नॉट ट्रू पूछा गया है बच्चे, नॉट ट्रू। तो इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये बात तो सही है ना। इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108, ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ही समन करते हैं आर्टिकल 108 के अंडर। इट इज मेंट टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, ये भी करेक्ट है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के डेडलॉक के ऊपर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बुलाई जा सकती, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक,
Constitution Amendment Bill is required to be passed by both the houses through special majority respectively. दोनों हाउसेस को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा. वहां पर आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते. ठीक है. Therefore, the incorrect statement was option C, that it can be used for resolving deadlocks over the constitution amendment bills. ठीक है. Clear है guys? Clear? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which article of the Indian Constitution prohibits the discussion of judges' conduct in Parliament except in cases of impeachment? ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्कशन ऑफ जजेस कंडक्ट, ठीक है, इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ इम्पीचमेंट. ए आर्टिकल 105, बी आर्टिकल 121, सी आर्टिकल 124 और डी आर्टिकल 217. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इम्पीचमेंट पूरे टाइम साल भर न्यूज में चल ही रहा था. तो ओलेट एग्जामिनेशन में भी आप इम्पीचमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना. सो कौन सा आर्टिकल है भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज प्रोवाइड करता है कि जजेस के कंडक्ट को आप इम्पीचमेंट के अलावा कभी डिस्कस नहीं कर सकते हाउस में? हाँ जी. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? 124 तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है. इट इज आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which prohibits the discussion of judges' conduct in parliament except in the case of impeachment. ठीक है. So the correct answer over here was option B. Clear? Sure. Let's move to the next one. Now, the next question is, who among the following is responsible for auditing of government expenditure in India? Who among the following is responsible for auditing the government's expenditure in India? A. Finance Commission, B. Comptroller and Auditor General, C. Public Accounts Committee, or D. Reserve Bank of India. हाँ जी. What's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है भाई? Correct, correct, correct. So the authority which is responsible for auditing government's expenditure in our country is the Comptroller and Auditor General of India. Correct, everyone. Correct. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which constitutional provision ensures that state legislative assembly cannot function indefinitely without elections? मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन सिर्फ ये कहना चाह रहा है, कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, इनडेफिनेटली वो नहीं चल सकती. A. Article 172, B. Article 174, C. Article 356, and D. Article 365. What's the correct answer in question number 22? 22 में correct answer is? The correct answer over here is beta option A. Article 172 of the Constitution of India ensures that the elections to, ठीक है, the elections to the legislative assembly of the states will be organized within 5 years from the date of the assembly of the session. ठीक है. Sure. Let's move to the next one. Now, the next question is, who decides on the disqualification of member of parliaments in cases other than defection? ठीक है. Who decides on the disqualification of members of parliament, ठीक, except or in cases other than defection? डिफेक्शन के अलावा कौन डिसाइड करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स को? ए. प्रेसिडेंट, बी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी. स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और डी. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हाँ जी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23? 23rd का आंसर इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी, that it is the Election Commission of India. Election Commission of India will give a report to the President of India. ऐसे समझो, ठीक है? But the decision is actually taken by the Election Commission and not the President. ठीक है? चल, let's move to the next one. Now, the next question is,
Which of the following statement about the Speaker of Lok Sabha is incorrect? Which of the following statement about the Speaker of Lok Sabha is incorrect? A. The Speaker presides over the joint sitting of the Parliament. B. The Speaker remains in his office even after the Lok Sabha is dissolved until a new Speaker is elected. C. The Speaker can cast a vote in first instance on any matter. Or D. The Speaker's salary is charged on Consolidated Fund of India. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा? हाँ जी, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर? करेक्ट, 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 इट इज ऑप्शन सी। क्योंकि स्पीकर जो वोट एक्सरसाइज करते हैं ना, उसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। दैट इज ही बेसिकली वोट्स लाइक अ टाई ब्रेकर सोल्यूशन। ठीक है, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में कभी भी वोट नहीं करेंगे, जब टाई हो जाएगा तब स्पीकर वोट करते हैं, जिसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution provides for the privileges of member of parliament? Which article of the constitution provides for the privileges of the member of parliament? A. Article 105, B. Article 110, C. Article 121, or D. Article 194? हाँ जी, which article of the constitution provides for the privileges of member of parliament? 105, 110, 121, or 194? What's the correct answer? Correct, beta. The correct answer is A. Article 105 of the Constitution deals with the parliamentary privileges. Okay? Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following is not a feature of Indian parliamentary system? Which of the following is not a feature of Indian parliamentary system? A. Collective responsibility. B. Separation of powers. C. Bicameralism. And D. Leader of opposition. Which of the following is not a feature of Indian parliamentary system? A, B, C, or D? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, आंसर अपने आप आएगा। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि दैट इज समथिंग विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। आर्टिकल 75 ने कहा ना that the entire council of minister is collectively responsible to the lower house of the parliament. हाँ या ना? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है या नहीं भाई? ठीक है, बाई कैमरलिज्म तो यस, बाई कैमरलिज्म भी है, बिकॉज वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा, तो भाई बाई कैमरलिज्म भी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो यस, कुछ टाइम पहले तक मल्लिकार्जुन खड़गे वाज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, and if I'm not wrong, currently I guess Mr. Rahul Gandhi is the current leader of opposition over there. हाँ या ना? Separation of power is something which is missing from the Indian parliamentary system. अब ये separation of power क्या है? Separation of power का मतलब आप basic तो समझते होगे ना? That separation of power basically means that all the organs of government all the organs of government are separate from each other. Yes or no? अब separation of power तो फिर उस सेंस में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ या ना भाई? है ना? that separation of power must exist between all these three organs. बट जब हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में देखते हैं तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर है हमारी कंट्री में? आंसर इज नो।
एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यस और नो? भाई लेकिन कोई भी पर्सन इस कंट्री में मिनिस्टर सिर्फ तब बन पाता है ना, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या एक्सेप्शनल सिचुएशन में। ठीक है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने तक एक मिनिस्टर रह सकते हो इस कंट्री में विदाउट बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एज द केस में बी। यस और नो? तो क्या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है? नहीं, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, and that is something it is considered as the core of the parliamentary system of government, which in turn ensures that the government remains responsible to the house of the people. ठीक है? So the correct answer over here was option B. Clear? Everyone? Clear है भाई? समझ में आया? चल आगे बढ़ते। Now, the next question is, which article provides for the disqualification of member of parliaments on the ground of defection? सेपरेशन, हाँ उसको आर्टिकल 50 को पढ़ना बेटा अच्छे से। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 50 को पढ़ोगे ना तो इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है हमारी कंट्री में। ठीक है, हाँ जी। सो विच आर्टिकल provides for the disqualification of member of parliament on the grounds of defection? So the correct answer over here is article 102 beta. Article 102 of the constitution deals with the disqualification of member of parliament. उसी आर्टिकल 102 में डिफेक्शन भी एक ग्राउंड मेंशन्ड है। ठीक है, 102 प्राइमरली डील्स विद द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी 102 में आपका डिफेक्शन का ग्राउंड भी मेंशन्ड है। ठीक है, so the correct answer over here is option A. Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statements regarding ordinance is not correct? Which of the following statements regarding ordinance is not correct? A, it has the same force and effect as an act of parliament. B, it must be approved by both houses of the parliament within 6 weeks of reassembly. C, it can amend the constitution, and D, it is promulgated by the president under article 123 of the constitution. What's the correct answer, guys, in question number 28? हाँ जी, 28 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट बेटा आदित्य, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। When an ordinance is promulgated by the president ना, ऑर्डिनेंस की सिमिलर पावर होती है जैसे एक्ट पास बाय पार्लियामेंट की होती है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट था। द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस इज 6 months plus 6 weeks. So the house is required or the parliament is required to reapprove the ordinance within 6 weeks from the date of its reassembly. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। The President of India is authorized to issue ordinance or promulgate ordinance under Article 123 of the Constitution. गवर्नर को हमने सिमिलर पावर दिया अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आप ऑर्डिनेंस को यूज नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी, दैट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which article of the constitution can parliament form a new state by separating territory from an existing state? Under which article of the constitution can parliament form a new state by separating territory from an existing state? A, article 2, B, article 3, C, article 4, and D, article 368. What's the correct answer in question number 29? हाँ जी, 29th का करेक्ट आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So it is Article 3 of the Constitution of India, which talks about internal
reorganization of the states। एंड इसी आर्टिकल 3 के हिसाब से एक नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट बाय टेकिंग सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 3। चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, assertion is the Rajya Sabha has a limited financial power compared to Lok Sabha, and reason is money bill can be introduced only in Lok Sabha and Rajya Sabha can only make recommendations regarding it। So what's the correct answer? क्लास कब तक है बेटा? 1-1.5 घंटा तो और चलेगी। अभी तो सिर्फ शुरू हुए बेटा अपन, 1-1.5 घंटा तो और चलेगी अभी। ठीक है, एंड जिस स्पीड से हम चल पा रहे हैं ऑब्वियसली आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं भी कर पाएंगे, देखते हैं कल कंटिन्यू कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, बट अभी एटलीस्ट 1 घंटा तो आप और मान के चलो कि चलेगी क्लास। हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हम्म, चलो, असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए हमें सिंपल फॉर्मेट को अपनाना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई दैट वेदर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ दैट वेदर बोथ स्टेटमेंट्स व्हिच आर गिवन ओवर देयर आर करेक्ट और नॉट। ये पहली चीज है जो हमें पता करनी है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, हाँ या ना भाई? both the statements are correct because statement 1 is saying Rajya Sabha has limited powers compared to limited financial powers compared to Lok Sabha। तो ये statement तो correct है। Reason कह रहा है money bill can be introduced only in Lok Sabha and the Rajya Sabha can only make recommendations regarding it। तो ये भी correct है। तो ऑप्शन सी और डी को तो हटा देते हैं, है ना? सी एंड डी को हटा देते हैं। लेट्स लुक एट, अब ये देखो बस सिंपल सी चीज है, असर्शन के बाद जस्ट ऐड बिकॉज and try to figure out कि whether it is making sense or not। तो assertion said that, ठीक है, assertion was that Rajya Sabha has limited power, financial powers compared to the Lok Sabha because a money bill can be introduced only in the Lok Sabha and Rajya Sabha can only make recommendations regarding it। So both the statements are correct and reason is actually justifying the assertion as well, that it is properly giving us a proper explanation regarding assertion as well। So therefore correct answer over here was option A beta। ठीक है, both the statements were correct and R was the correct explanation of A as well। ठीक है, चल, let's move to the next one now। The next question is which of the following statement is incorrect? The next question is which of the following statement is incorrect? The Speaker of the Lok Sabha is responsible for deciding whether a bill is money bill। The Rajya Sabha can only delay an ordinary bill by a maximum of 6 months। A constitution amendment bill require approval from both houses of the parliament by simple majority। And D, the president is bound to give his assent to money bill after it has been passed by the parliament। हाँ जी, what's the correct answer in question number 31? हाँ जी, the correct answer is, देखो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग मनी बिल वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ये तो करेक्ट है। राज्यसभा कैन ओनली डिले एन ऑर्डिनरी बिल बाय मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, ये भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयरफॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर वाज ऑप्शन सी। ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चल, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the next question is that which of the following are financial privilege enjoyed exclusively by the Lok Sabha? Which of the following are financial privileges enjoyed exclusively by the Lok Sabha? A, power to introduce a money bill. B, power to pass a vote of no confidence. C, power to amend a money bill. And 4, power to reject a demand for grant। What's the correct answer, guys, in question number 32? हाँ जी, what's the correct answer? पीडीएफ will be provided बेटा eventually, परेशान मत हो, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को बाद में। ठीक है,
हाँ जी, what's the correct answer, guys, in question number 32? Correct answer is the correct answer in question number 32 was option C, beta. Power to introduce a money bill, that's a privilege of Lok Sabha. Power to pass a vote of no confidence, it is not a financial privilege. ठीक है, पावर टू पास और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल प्रिविलेज पर से, इसलिए वो यहां पर करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. पावर टू अमेंड द मनी बिल अगेन, एंड पावर टू रिजेक्ट अ डिमांड फॉर ग्रांट अगेन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4. ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, इस स्लाइड पे दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो पहले 33 सॉल्व करो एंड देन विल मूव टू 34. ठीक है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. पहले 33rd सॉल्व करो. So the question was, which of the following is not exercised by the parliament? ठीक है, which of the following powers is not exercised by the parliament? A, power to amend the constitution, power to impeach the president, power to appoint the prime minister, and power to remove judges of the Supreme Court. What's the correct answer in question number 33? हाँ जी, 33 का करेक्ट आंसर क्या है भाई? हम्म, 33 का आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. It's power to appoint the prime minister. This is the responsibility of the political party, beta, which comes into power. They'll decide na that who will be appointed as the prime minister of the country. Parliament का इसमें लेना देना थोड़ी ना है. वो तो the political party which is in power, which is having majority in the house, or the coalition of the political parties which is having majority in the house, they will decide that who is going to become the prime minister of the country. है ना, बाकी तीनों काम तो पार्लियामेंट करती ही है. So therefore the correct answer in question number 33 was option C. ठीक है, चलो let's come to the next one. Who has the power to dissolve the state legislative assembly before completion of its term? ठीक है, 34th question क्या है? That who has the power to dissolve the state legislative assembly before the completion of its term? A, chief minister, B, governor, C, president, or D, speaker of the assembly. What's the correct answer in 34? 34 का आंसर इज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. 34 का आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गवर्न. ठीक है, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु विल डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू बिकम. ठीक है, हु इज गोइंग टू बिकम और व्हेन द पर्टिकुलर हाउस इज गोइंग टू बी डिसॉल्व. ठीक है, अब थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपन, क्योंकि अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के तो कर लिए कुछ क्वेश्चंस, है ना, थोड़ा सा मोनोटोनस जैसा भी लगने लगा होगा. अब थोड़े से अपन क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. चलो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ठीक है, so the question is, what is the legal term for a written order issued by a court? What is the legal term for an order issued by a court? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, किधर गया, हाँ. What is the legal term for an order issued by the court to prevent a person from carrying out a specific action? A, warrant, B, subpoena, C, injunction, or D, summons. What's the correct answer in question number 250? The correct answer is the correct answer is correct, correct. It is option C, that is injunction. Okay, the correct answer over here is option C, that is injunction. Chal, let's move to the next one.
Now, the next question is which of the following legal principles dictates that individuals are presumed innocent until proven guilty? ठीक है क्वेश्चन क्या है कि which of the following legal principles dictates that individuals are presumed innocent until proven guilty? A. Burden of proof. B. Presumption of innocence. C. Due process. Or D. Rule of law. What's the correct answer in question number 251? The correct answer is option B. Correct, correct. It is presumption of innocence. Correct, beta. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is what is the purpose of bail? What is the purpose of bail? A. To ensure the accused appears for trial. ठीक है C. B. To punish the accused. C. To prevent the accused from committing further crimes. And D. To punish the victim. What's the correct answer? What's the purpose of bail, guys? A, B, C, or D? Correct, beta Anushka. Correct, correct, Prathimesh. The purpose of bail is to ensure that the accused appears for trial. ठीक है? It's not to prevent the accused from committing any further crime. भाई बेल दे दोगे तो भी क्राइम कर देगा वो. That's not the purpose. Purpose क्या है? ये इंश्योर करवाना कि बेल पे हम रिलीज कर देंगे, but you will ensure that you will appear for the trial. ठीक है? So the correct answer over here was option A. चल, let's move to the next one. Now, the next question is a confession made to a police officer is A, admissible as evidence, B, inadmissible as evidence, C, valid only if made in writing, and D, valid if made in the presence of a magistrate. What's the correct answer in 253? Hanji, what's the correct answer, guys? A confession made to a police officer is A, admissible as evidence, B, inadmissible as evidence, C, valid only if made in writing, or D, valid if made in the presence of a magistrate. The correct answer is correct, 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 everyone. So the correct answer over here was option B, that is, it is inadmissible as evidence. Okay? Chal, let's move to the next one. The next question is which type of punishment is abolished in India? ठीक है क्वेश्चन क्या है which type of punishment is abolished in India? A, imprisonment for life, B, capital punishment, C, exile, or D, death by hanging. What's the correct answer? Which type of punishment, ठीक है, which type of punishment is abolished in our country? Imprisonment for life, capital punishment, exile, or death by hanging? Correct, correct. The correct answer over here is exile is no more a form of punishment in our country. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is in a criminal case, if the prosecution fails to prove guilt beyond a reasonable doubt, what is the consequence? In a criminal case, if the prosecution fails to prove guilt beyond a reasonable doubt, what is the consequence? A, the accused is convicted with a reduced sentence. B, the accused is acquitted. C, the case is reopened for additional evidence. Or D, the accused is declared a habitual offender. Hanji, what's the correct answer? क्या करेक्ट आंसर है भाई 255 में? The correct answer is correct. Option B, that is the accused is acquitted. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is which stage of crime is generally not punishable except for specific offenses like waging war or dacoity? Which stage of crime is generally not punishable except for specific offenses like waging war or dacoity? What's the correct answer?
अरे अकम्पलिशमेंट, सीरियसली गाइस, इतना गलत कैसे हो सकता है? इट इज डी, इट्स प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन को जनरली पनिशेबल नहीं रखा गया, बट कुछ ही टाइप ऑफ ऑफेंसेस के केस में प्रेपरेशन इज कंसिडर्ड एज पनिशेबल इन नेचर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन डी। ठीक है, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the Latin maxim that signifies the requirement of guilty mind for a crime? What is the Latin maxim that signifies the requirement of a guilty mind for a crime? A. Ignorantia juris non excusat. B. Actus non facitrium nisi mensitria. C. D. Minimis non curat lex. Or D. Respondeat superior. Anji, what's the correct answer? In 257, which Latin maxim signifies the requirement of guilty mind? Correct, 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 everyone. So it is actus non facitrium nisi mensit rea, which simply means that an act in itself is not crime. An act in itself is not crime unless done with guilty intention. ठीक है, so the correct answer over here was option B. चलिए, let's move to the next one. Now the next question is, criminal conspiracy requires an agreement between how many persons? ठीक है, बाकी ऑप्शंस के भी, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट का मतलब सिंपल सा है बेटा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ is of no excuse. डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स का मतलब है ट्रिवियल एक्ट्स आर नॉट पनिशेबल। एंड रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर का मतलब सिंपल सा है कि लेट द सुपीरियर बी लायबल। ठीक है, रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर का मतलब है लेट द सुपीरियर बी लायबल। ठीक है, चलिए भाई, हाँ जी। सो 258 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिक्वायर्स एन अग्रीमेंट बिटवीन हाउ मेनी पर्सन्स? A, two or more, B, only one, C, three or more persons, or D, five or more persons. What's the correct answer in 258? हाँ जी, 258 का correct answer is option A, that criminal conspiracy requires an agreement between two or more persons. ठीक है, चलो, let's move to the next one. Now, if A instigates B to murder C, but B refuses, is A guilty of any offense? If A instigates B to murder C, ठीक है, if A instigates B to murder C, but B refuses, is A guilty of any offense? A, no, because no crime was completed. B, yes, as A is guilty of abetting B to commit murder. ठीक है, C, only if B was child or lunatic. D, only if A also aided B. What's the correct answer? 259 में, 259 में बेटा आंसर इज बी, यस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग टू कमिट मर्डर। मर्डर हुआ नहीं हुआ बात अलग है, आपने इंस्टिगेशन तो दिया ना। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज that what are offenses called where a person may be held liable even without a guilty intention? What are the offenses called? ठीक है, what are the offenses called where a person may be held liable even without a guilty intention? कि अगर guilty intention missing भी है, ठीक है, तब उस तरीके के offenses को हम क्या कहते हैं?
A. General exceptions. B. Justifiable exceptions. C. Strict or absolute liability offenses. Or D. Trivial acts. What's the correct answer in question number 260? 260 में आंसर इज ठीक है. Any example of strict or absolute liability offenses? हाँ जी, एग्जाम्पल बता दो अब जल्दी से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस का. कोई भी एक एग्जाम्पल चलेगा. Wherein a person will be held responsible even though guilty intention is missing. Hmm. एग्जाम्पल इज बेसिक किडनैपिंग. किडनैपिंग क्यों करी? आप किसी के बच्चे को टॉफी खिलाने भी ले जाओ, ठीक है. मैं टॉट की बात ही नहीं कर रहा बेटा, हम तो यहाँ पर क्राइम की बात कर रहे हैं. टॉट की तो बात ही नहीं कर रहे अपन, ठीक है. आप लोग एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को वहां पर टॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है. हम टॉट की तरफ जा ही नहीं रहे, मैं तो क्राइम की बात कर रहा हूँ. किडनैपिंग में इकलौती रिक्वायरमेंट क्या है कि हम बच्चे को विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन लेकर चले गए थे. मान लो आप उस बच्चे को टॉफी दिलाने ले गए थे, तो भी वो किडनैपिंग है, ठीक है. तो भी वो किडनैपिंग है. सो irrespective of the fact that whether your intention was present over there or not, as long as the child was moved outside the guardianship without the consent of the guardian, that in itself becomes an offense in the eyes of law. ठीक है. चलो, let's move to the next one. Now, the next question is the defense encapsulated by ignorantia juris non excusat applies to which type of mistake? हाँ जी, the defense encapsulated by, ठीक है, the defense encapsulated by the maxim ignorantia juris non excusat applies to which type of mistake? A. Mistake of fact. B. Mistake of any law. C. Bona fide mistake. Or D. Mistake of circumstances. What's the correct answer? Everyone, क्या करेक्ट आंसर है भाई? Correct, everyone. Correct, correct. It is about mistake relating to any law. Correct, guys. Correct. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is that if an adult causes a minor scratch on the knee of another person, no crime may be committed because of the principle that if an adult causes minor scratches on the knee of another person, no crime may be committed because of the principle that A. Intention is irrelevant. B. The act was authorized by law. C. De minimis non curat lex. Or D. It was done in private defense. What's the correct answer? Hmm. इसमें सबसे अप्रोप्रिएट डिफेंस की कौन सी सिचुएशन आपको लगती है? Correct, everyone. Very good. Very good. Very good, beta. Correct. So the correct answer was option C. It is de minimis non curat lex. Okay? Which simply means the defense of trivial acts. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, what is the age limit below which a child is presumed to be incapable of forming any criminal intention? Okay. What is the age below which a child is presumed to be incapable of forming any criminal intention? A. Up to 7 years. B. Up to 5 years. C. Up to 12 years. Or D. Up to 18 years. What's the correct answer? Anji. What's the correct answer, guys? Up to 7 years, beta. 0 to 7 is the application of rule of Dolly incapacit. That is incapable of committing crime. 7 to 12 and 12 to 18. In these situations, you basically look at the understanding, that is
the capacity of the child to understand the nature and consequences of his act. ठीक है, 0 to 7 years तक तो आपकी जीरो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, because that is something it is considered as the age of not capable of creating any kind of guilty intention. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is that if a person commits an act while intoxicated, for the exception of involuntary intoxication to apply, the intoxication must be, if a person commits an act while being intoxicated, for the exception of involuntary intoxication to apply, the intoxication must be A, intentional and self administered, B, without knowledge or against will, C, only partial allowing some control, or D, administered by doctor. Hanji, what's the correct answer in 264? The correct answer is correct. The intoxication is required to be involuntary. And involuntary किस situation में माना जाएगा? In option B, that is without knowledge or against will. ठीक है? चल, let's move to the next one. Now, the next question is that the right of private defense is available to protect the body and property of which persons? The right of private defense is available to protect the body and property of which persons? A, only one's body, B, only one's own property, C, one's own body and property as well as the body and property of any other person, or D, only public servants. What's the correct answer in 265? 265 में correct answer is correct, beta. Correct. The right of private defense extends to protect the body of one's own as well as body and property of any other person as well. So the correct answer over here was option C. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is the principle that harm inflicted on the offender should not be more than what is required for the purpose of defense is known as the principle of. The principle that harm inflicted on the offender should not be more than what is required for the purpose of defense of, or for the purpose of defense is known as the principle of A, mens rea, B, proportionality, C, justification, or D, necessity. What's the correct answer in 266? Hanji, the correct answer is that is the principle of proportionality, beta. Your right of self-defense is required to be proportional to the threat, ना? Yes or no? अब यहां पर तो उन्होंने डिफेंस की बात करी दी है, मतलब प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस को वो रेफर कर रहे हैं, और सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोपोर्शनल टू द थ्रेट. Yes or no? So therefore, correct answer over here was option B. That is the rule of principle of proportionality. ठीक है? Clear? चल, let's move to the next one. Now, the next question is, what type of property must be involved in the crime of theft? What type of property must be involved in the crime of theft? What's the correct answer? Hanji. A, immovable property, B, land or buildings, C, valuable security, or D, movable property. What's the correct answer in 267? अरे बिल्डिंग नहीं बेटा, बिल्डिंग कैसे चुराएंगे अपन? So the correct answer is correct, everyone. Correct. So the type of property which must be involved in the crime of theft is movable property. ठीक है? चल, let's move to the next one. Now, extortion involves intentionally putting a person in fear of injury to that person or to another, thereby dishonestly inducing the person to deliver what? Extortion involves intentionally putting a person in fear of injury to that person or to another, thereby dishonestly inducing that person to deliver what? A, only valuable security. B, any property or valuable security or anything signed which may be converted into valuable security.
सी ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी और डी ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? पॉइंट इज इसके लिए आपको सिर्फ एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए थी, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 268 में? द करेक्ट आंसर इज करेक्ट, करेक्ट. It is to deliver or to induce that person to deliver any property or valuable security or anything signed which may be converted into valuable security. ठीक है? This is the subject matter of the offense of extortion. ठीक? चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, in the distinction between theft and extortion, who moves the property in the case of extortion? In the distinction between theft and extortion, who moves the property in the case of extortion? What's the correct answer? A, the aggressor moves the property himself. B, the property is moved by a third party. C, the victim is made to deliver the property. Or D, the property is not moved, only damaged. What's the correct answer, guys? हाँ जी. The answer is अच्छा, ठीक है. चलो, अब जल्दी जल्दी से मुझे बताना, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ये तीन ऑफेंसेस हैं हमारे पास, है ना? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, ये तीन ऑफेंसेस हैं. चलो, थेफ्ट में प्रॉपर्टी कौन मूव करता है? यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है? यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं, अक्यूज्ड एंड विक्टिम. थेफ्ट में प्रॉपर्टी कौन मूव करता है? हु मूव्स द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट? जल्दी से बताओ. अरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ. थेफ्ट में प्रॉपर्टी कौन मूव करेगा? चोर. बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा. और एक्सटॉर्शन में कौन मूव करेगा? वसूली भाई. थेफ्ट में चोर, एक्सटॉर्शन में वसूली भाई. ठीक है, चलो. सो थेफ्ट में द प्रॉपर्टी इज मूव्ड बाय अक्यूज्ड. व्हाट इज थेफ्ट बेटा? थेफ्ट इज द मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन whose possession the property is. Yes or no? तो थेफ्ट के केस में द प्रॉपर्टी इज मूव्ड बाय द अक्यूज्ड हिमसेल्फ. ठीक है, चल. एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूव कौन करेगा? एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूव कौन करेगा? एक्सटॉर्शन में द प्रॉपर्टी विल बी मूव्ड बाय द विक्टिम. ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड. चल, अब बताओ कि रॉबरी में कौन मूव करेगा भाई? हु विल मूव द प्रॉपर्टी इन द ऑफेंस ऑफ रॉबरी? रॉबरी के ऑफेंस में प्रॉपर्टी कौन मूव करेगा? रॉबरी में विक्टिम मूव करेगा. विक्टिम पक्का? पक्का विक्टिम? सबका फाइनल आंसर विक्टिम है रॉबरी में भी? क्योंकि नाम ही रॉबरी है सर, तो इसमें तो विक्टिम ही होगा बेचारा, और कौन होगा? अक्यूज्ड, विक्टिम, अक्यूज्ड. चल देखो, इसमें सिंपल सा हिसाब है. बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन, आप ऐसे याद रखो ना, क्या रॉबरी अपने आप में कोई ऑफेंस है? नहीं ना. या तो हम थेफ्ट को रॉबरी बना देते हैं, या हम एक्सटॉर्शन को ही रॉबरी बना देते हैं. यस और नो? रॉबरी इज नॉट अ स्टैंड अलोन ऑफेंस, राइट? मतलब मैंने जो थोड़ा बहुत क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत क्रिमिनल लॉ मुझे आता है, उसके हिसाब से मुझे इतना पता है दैट रॉबरी इज नॉट अ स्टैंड अलोन ऑफेंस, राइट? आइदर थेफ्ट विल बिकम रॉबरी because of certain changes in circumstances, or extortion will become robbery because of certain changes in circumstances. Yes or no? तभी हम उसको रॉबरी बाय थेफ्ट या रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन कहते हैं. हाँ या ना भाई? है ना?
तभी हम उसको रॉबरी बाय थेफ्ट या रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो अब सिंपल सी चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबरी में कौन प्रॉपर्टी मूव कर रहा है, तो पलट के उससे क्वेश्चन पूछोगी है कौन सी वाली रॉबरी। तो अगर कुछ उसे कुछ नहीं आता होगा तो वो डर जाएगा, वो समझ जाएगा तुम्हें बहुत आता है। तो सिंपल सी चीज है, इट इज रॉबरी बाय थेफ्ट देन द प्रॉपर्टी इज मूव्ड बाय द अक्यूज्ड, and if it is robbery by extortion then the property is moved by the victim. Yes or no? मतलब मैंने सही कहा ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? कि अगर रॉबरी बाय थेफ्ट है तो प्रॉपर्टी अक्यूज ने मूव करी है, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन है तो प्रॉपर्टी विक्टिम ने मूव करी है। ठीक है, ठीक, चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum number of people required for to conjointly commit the offense of dacoity? What is the number of people required or number of persons required to conjointly commit the offense of dacoity? dacoity commit करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए? ठीक है, अच्छा मुझे पता है मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन सही में हो गई, ओके थैंक यू। चलो, so what is the number of people required to conjointly commit the offense of dacoity? Correct, everyone. Correct, correct. So for the offense of dacoity, the number of persons which is required is five or more. Okay. So the correct answer over here is option D. Chal. Let's move to the next one. Now, the next offense is, or the next question is, to establish the offense of criminal misappropriation of property, the property concerned must be. Okay. To establish the offense of criminal misappropriation, the property concerned must be A, immovable property, B, movable property, C, land attached to earth, or D, intangible assets. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के ऑफेंस में, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के ऑफेंस में प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? Correct, everyone. The property which must be involved over there must be movable property. Okay? So the correct answer over here is option B. Chali. Let's move to the next one. Now, the next question is A finds a purse not in possession of another person. Okay? A finds a purse not in possession of another person. If A takes it with the intention of protecting it for the owner, is A guilty of a crime? A finds a purse not in possession of another person, and if A takes it with the intention of protecting it for the owner, is A guilty of a crime? Hanji. What's the correct answer, guys? In 272, the correct answer is correct, everyone. The correct answer over here is no. If the intention is to protect it or restore it to the owner, so there is no offense in this situation. So the correct answer over here was option A. Correct, everyone. Correct. Correct. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is in criminal breach of trust, the accused must have been entrusted with A, only immovable property, sorry, only movable property, B, only valuable security, C, property or dominion over a property, or D, cash only. Hanji. In criminal breach of trust, the accused must have been entrusted with, in criminal breach of trust, the accused must have been entrusted with A, only movable property, B, only valuable security, C, property or dominion over property, and D, cash only. What's the correct answer? In 273, the correct answer is correct, correct. The correct answer over here is option C. That is, it is property or dominion over the property. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, what offense occurs when someone intentionally causes damage to the property, thereby reducing its value and usefulness? What offense occurs? Okay? What offense occurs
when someone intentionally causes damage to the property, thereby reducing its value and usefulness. Hmm. A, theft, B, extortion, C, forgery, or D, mischief. What's the correct answer? बस बेटा 10 एक क्वेश्चन और हैं क्रिमिनल के, वो खत्म करके फिर वापस चलते हैं. ठीक है, विल मूव बैक टू द क्वेश्चंस ऑफ जीके ओनली. हाँ जी, व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? द करेक्ट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन डी, दैट इज इट इज मिस्चिफ. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ what is the key requirement for the offense of cheating? What is the key requirement for the offense of cheating? A, entrustment, B, forceful compulsion, C, deception, or D, physical restraint. Hanji, what's the correct answer? What is the key requirement for the offense of cheating? A, entrustment, B, forceful compulsion, C, deception, or D, physical restraint. The correct answer is entrustment. बेटा आपका breach of trust में required है. ठीक है, entrustment का essential आपका required है in the offense of breach of trust. जब cheating की बात करते हैं तो cheating में deception is the core of the offense. ठीक है, so this is the key requirement for the offense of cheating, that is deception. चलो let's move to the next one. Deception मतलब धोखा देना बेटा, धोखा. ठीक है, चलो. Now, the next is forgery is the crime of falsely making or altering a document with the intent. ठीक है, forgery is a crime. Forgery is a crime of falsely making or altering a document with the intent A, to annoy the victim, B, to deceive, C, to cause trivial harm, or D, to obtain public office. What's the correct answer? हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है भाई? The correct answer is, so forgery is the crime of falsely making or altering a document with the intent to deceive someone. नकली डॉक्यूमेंट आप क्यों बनाओगे? किसी को डिसीव करने के लिए ना, किसी को धोखा देने के लिए. ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, kidnapping from lawful guardianship is committed if a person takes or entices a minor out of the keeping of a lawful guardian whose consent is irrelevant in this context. Whose consent is irrelevant in this context? A, the minor's consent, B, the guardian's consent, C, the state's consent, or D, the abettor's consent. What's the correct answer in 277? हाँ जी, the correct answer is, किसका consent irrelevant होता है भाई kidnapping from lawful guardianship के offense के लिए? Correct. So the correct answer is, it's the minor's consent which is irrelevant in this situation. ठीक है, माइनर का कंसेंट आपका बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होता है वहां पर. ठीक, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनलाइक किडनैपिंग, abduction can be done with respect to a person of, unlike kidnapping, abduction can be done with respect to a person of A, only unsound mind, B, only a minor, C, any age, or D, only a female child. What's the correct answer? The correct answer is correct, everyone. Correct, correct. So the correct answer over here is option C. माइनर किडनैप होगा, अनसाउंड माइंड का पर्सन चाहे किसी भी एज का हो वो किडनैप ही होगा. ओनली अ फीमेल चाइल्ड, वो भी किडनैप ही होगी. ठीक है, बाकी सब केसेस को हम अबडक्शन की कैटेगरी में रख लेते हैं. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, occurs when a person obstructs another person from proceeding in a direction in which the latter has
A, intention to proceed, B, a right to proceed, C, moral compulsion to proceed, or D, no choice but to proceed. बाय एलिमिनेशन अगर उस क्वेश्चन में जाओगे बेटा आदित्य तो वही ऑप्शन बचता है, आया ना, है ना। एलिमिनेशन में जाओगे तो फिर वही तो एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि बाकी तीनों तो स्पेसिफिकली आपके किडनैपिंग के ही ऑफेंस में फॉल कर सकते हैं, राइट। हाँ जी। सो द करेक्ट आंसर इन 279 इज करेक्ट ऑप्शन बी। The offense of wrongful restraint occurs when a person obstructs another person from proceeding in a direction in which the latter has a right to proceed. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, क्रिमिनल के क्वेश्चंस भी हमारे खत्म हो गए भाई, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट्स मूव बैक टू द जीके क्वेश्चंस व्हिच यू आर डूइंग। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कल हम लोग टॉट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना गाइस, जिसके बाद yesterday we were solving TOTS के questions, right? जिसके बाद there was a glitch and we had to end it. हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, abduction 18 के ऊपर जाता है, राइट। ठीक है, चलो यार 2-4 मिनट का एक ब्रेक ले लें, फिर टॉट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड इफ द टाइम परमिट्स we'll मूव विथ द जीके के क्वेश्चंस आज वेल। ठीक है, तो थोड़े से टॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इस 2-4 मिनट का एक ब्रेक ले लें। लॉजिकल बेटा रात में है ना, मुकेश सर की क्लास लगी तो है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, आप लोगों के लिए मुकेश सर की क्लास लगी है रात में, वो एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों को कराएंगे, परेशान क्यों हो रहे हो? बिकॉज यू गाइस आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग इट कि आपको लॉजिकल की मैराथन चाहिए, अब होगी, आज भी है, and जैसा टाइम परमिट करेगा आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी वो। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक 2 और 3 मिनट्स का ब्रेक बेटा, थोड़ा सा, है ना, मेरे गले को ही थोड़ा सा मतलब वो मिल जाए, बाकी तो फिर अपन कंटिन्यू कर ही लेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है, देन विल कंटिन्यू। ठीक, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक, जस्ट 5 मिनट्स।
ऑडिबल? अभी ठीक है? अब तो बफर नहीं हो रहा? ऑडिबल राइट? चलो ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट. ठीक है, सो आई गेस ये क्वेश्चन तो हमने कल सॉल्व कर लिया था, है ना? जल्दी से फिर भी इसका करेक्ट आंसर बता दो एक बार. व्हाट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर? So the question was, which of the following is not, which of the following is not an essential element of tort? So the correct answer over here was option C. That is, criminal intention is not an essential element of tort. ठीक है? चल, let's move to the next one. Next question देखते हैं भाई. चल, अगला क्वेश्चन है that the principle of ubi jus ibi remedium means what? The principle of ubi jus ibi remedium means what? A, where there is a right there is a remedy. B, no one should be a judge in his own case. C, a person cannot be punished twice for the same offense. And D, an act of God is not punishable. What's the correct answer in question 116? करेक्ट एवरीवन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो 116th का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ उबिजुस इबी रेमेडियम. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which case established the principle of neighbor principle in tort law? कल भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, है ना? नेबर रूल दैट इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ नेग्लिजेंस, कि भाई नेग्लिजेंस इज अबाउट ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द पर्सन, बट द थिंग इज टू whom do we owe this duty of care? So that was something which was explained through the concept of the principle of neighbor, है ना, जिसको हम नेबर प्रिंसिपल या नेबर रूल कहते हैं. तो किस केस से आया था भाई वो? That particular thing came from the case of Donog versus Stevenson, which is the ginger beer case. Okay, chal. Let's move to the next one. Now, the next question is that in tort law, vicarious liability means what? In tort law, vicarious liability means A, liability of employer for the acts of his employee. B, the liability of an individual for his own acts. C, liability of a person for a crime. Or D, liability of the state only. So what's the correct answer in 118? 118 my correct answer is correct. It is the liability of an employer for the acts of his employee. This is the correct meaning of the concept of vicarious liability. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, in which case was the principle of strict liability established? In which case was the principle of strict liability established? Strict liability का principle किस case में establish हुआ था? A, Rylance versus Fletcher. B, Donog versus Stevenson. C, Carlyle versus Carbolic Smokeball Company. Or D, Bind versus Bodle. हाँ जी. What's the correct answer? Strict liability का principle came up in the case of, correct everyone, correct, correct, correct. So it basically came in the case of Rylance versus Fletcher. Okay, chalo. Let's move to the next one. Now, the next question is, what is the difference between strict liability and absolute liability? What is the difference between strict liability and absolute liability? A, absolute liability has no exceptions, whereas strict liability has some exceptions. B, both are the same. C, strict liability is only for private wrongs. D, absolute liability only applies to defamation acts or defamation cases. What's the correct answer between strict and absolute liability? Correct, everyone. Correct, correct. So the primary difference is that absolute liability has no exceptions, whereas strict liability has some exceptions. मीनिंग देयर बाय कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में आपके पास ऑप्शन होता है
that you can take the benefit of certain defenses. जैसे plaintiff is the wrongdoer, act of a stranger, so on and so forth. बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में आपको किसी भी तरीके का कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड अप्लाइज व्हेन द डैमेज इज कॉज्ड बाय. The defense of act of God is applied when the damage is caused by A. Deliberate act of a person, B. An unforeseen natural event beyond human control, C. A mistake of law, and D. A negligent act. What's the correct answer in 121? Correct, everyone. Correct, correct. So the defense of act of God applies when the damage is caused by an unforeseen natural event beyond human control. ठीक है, चल let's move to the next one. Now the next question is res ipsa loquitur means what? Res ipsa loquitur means what? A, the thing speaks for itself. B, let the buyer beware. C, no one should suffer unjustly. Or D, the law will not help the negligent. What's the correct answer? What's the meaning of res ipsa loquitur? So res ipsa loquitur simply means that the things speak for itself. So these are the cases of negligence wherein such an injury to the plaintiff could not have been caused but for the negligence of the person. But for the negligence of the defendant. एंड रेस इप्सा लॉकिटर के केसेस का एक और कॉन्सिक्वेंस होता है. ठीक है, wherever the court will apply the rule of res ipsa loquitur na, the burden of proof actually shifts to the defendant. The burden of proof actually shifts to the defendant. कि भाई जैसे ही अगर वहां पर प्लेंटिफ ने बता दिया कि इस पर्सन की वजह से ये इंजरी हुई है और इंजरी देख के कोर्ट को समझ में आ गया कि बट फॉर द नेग्लिजेंस दिस काइंड ऑफ इंजरी कैन नॉट टेक प्लेस, वहां पर फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होकर डिफेंडेंट के ऊपर चला जाता है. नाउ द डिफेंडेंट विल हैव टू प्रूव दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट इन हिज एक्टिविटी. ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी laid down in India? In which case was the concept of absolute liability laid down in India? A. MC Mehta versus Union of India, B. Rylance versus Fletcher, C. Ashby versus White, or D. State of Rajasthan versus Vidyavati. What's the correct answer? In which case was the concept of absolute liability laid down in our country? So it was the case of, correct, it was the case of MC Mehta versus Union of India, जिसको ओलियम गैस लीक केस भी हम कहते हैं. ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस वाज द प्रिंसिपल ऑफ injuria sine damnum established? In which case was the principle of injuria sine damnum established? A. Ashby versus White, B. Rylance versus Fletcher, C. Donog versus Stevenson, and D. Gloucester Grammar School case. इंजूरिया साइन डैमनम किस में एस्टैब्लिश हुआ था भाई? देखो बेटा, Gloucester Grammar School case is related to damnum sine injuria. ठीक है, Gloucester Grammar School is actually related to damnum sine injuria. Injuria sine damnum का जो आपका केस है, that's the case of Ashby versus White. ठीक है, so the correct answer over here was option A. चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following is not a valid defense in tort law? ठीक है, next question is, which of the following is not a valid defense in tort law? A. Voluntary non-fit injuria, B. Inevitable accident, C. Ignorance of law, and D. Act of God. हाँ जी, what's the correct answer in 125? Which of the following is not a valid defense in tort law? So the correct answer is correct. The correct answer is it is ignorance of law, which is not excusable. है ना, इसलिए तो वो मैक्सिम एग्जिस्ट करता है that ignorantia juris
juris non excusat. Okay, so the correct answer over here was option C. Okay, chalo, let's move to the next one. Now the next question is, which of the following is an example of defamation per se? Which of the following is an example of defamation per se? False accusation of a crime, a statement lowering someone's reputation only within a particular group, a private insult, or D, criticism of politician in good faith. What's the correct answer? Hmm. Which of the following is an example of defamation per se? देखो, defamation per se का मतलब क्या होता है पहले ये समझना. Defamation per se का मतलब ये है that the plaintiff is not required to prove that he suffered some kind of damage because of the statement. ठीक है? That statement in itself is considered as defamatory as per law. Plaintiff को वहां पर अलग से कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. बी बहुत टेम्पटिंग लगेगा. That is a statement which is lowering someone's reputation only within a particular group. But what if the statement is true? Will it be considered as defamatory? What if the statement is true? मैं अगर किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो चुका हूं, ठीक है, मैं अगर किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो चुका हूं और उसके बाद आप मेरे मोहल्ले में आकर बताओ सबको दैट दिस पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, मेरी रेपुटेशन तो लोगों की नजरों में गिरेगी, हाँ या ना? बट विल इट बी कंसिडर्ड एज डेफिमेशन पर से? नहीं ना, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड वेर इन देर इज अ फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ क्राइम, किसी क्राइम का ही फॉल्स एक्यूजेशन लगा हुआ है, फॉल्स है, तब तो फिर वो अपने आप में डेफिमेटरी बन जाएगा ना. Yes or no? So which is going to be much appropriate answer over here? Right? And therefore, correct answer in question number 126 was option A. Clear? Clear, everyone? Clear? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following torts does not require proof of damage? Which of the following torts does not require proof of damage? A, negligence, B, nuisance, C, defamation and D, trespass to land. इनमें से किस टॉर्ट में आपको डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है? ए, नेग्लिजेंस, बी, न्यूसेंस, सी, डेफेमेशन एंड डी, ट्रेसपास टू लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज, बेटा डेफेमेशन में आपको डैमेजेस प्रूव करने पड़ेंगे, न्यूसेंस में भी करने पड़ेंगे, नेग्लिजेंस में भी करने पड़ेंगे. ट्रेसपास टू लैंड इज एक्शनेबल पर से. ठीक है, ट्रेसपास टू लैंड इज अ काइंड ऑफ अ टॉर्ट विच इज actionable per se. That is, the mere entry of the defendant without any justification on the plaintiff's land is something which is actionable per se. वहां पर डिफेंडेंट ने कुछ डैमेज किया है, ये चीज अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, so therefore the correct answer over here was option D, that is trespass to land. चलो, let's move to the next one. Now the next question is, which of the following is not a defense against defamation? Which of the following is not a defense against defamation? A, justification, B, fair comment, C, malice, and D, privilege. What's the correct answer? Which of the following is not a defense? Anji. The correct answer is correct. Malice is not a defense ना, ये तो कभी कहीं डिफेंस की तरह काम नहीं कर पाएगा. So the correct answer over here was option C, that is malice. Chalo, let's move to the next one. Now, which section of the Indian Contract Act defines a contract? Which section of Indian Contract Act defines a contract? A, section 2A, B, section 2B, C, section 2H, and D, section 10. Which section of the Indian Contract Act gives us a definition of contract? किस सेक्शन में डेफिनेशन गिवन है भाई? It is section 2H of the Indian Contract Act which gives us the definition of contract
as an agreement enforceable by law. ठीक है? So the correct answer over here was option C, beta. Section 2H gives us the definition of contract. ठीक है? चल. Let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following is not a valid essential element of a contract? Which of the following is not a valid essential element of a contract? इनमें से कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? A. Lawful consideration. B. Free consent. C. Acceptance in writing. Or D. Competent parties. What's the correct answer? The correct answer is correct. Correct. देखो, lawful consideration is a requirement. Free consent is a requirement. Competent parties is also a requirement. एक्सेप्टेंस हमेशा राइटिंग में हो ये चीज जरूरी नहीं है क्योंकि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ओरल वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, है ना? एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन सी. ठीक है? चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ माइनर्स अग्रीमेंट इज a minor's agreement is A. Voidable at the option of the minor. B. Void ab initio. C. Valid if ratified after attaining majority. Or D. Enforceable if entered into with the consent of guardian. What's the correct answer? 131 का. 131 का आंसर is correct, everyone. So a minor's agreement is void ab initio. ठीक है? चल, let's move to the next one. Now, the rule of consensus ad idem means what? The rule of consensus ad idem means what? A. Consideration must be lawful. B. There must be free consent. C. Both parties must agree on the same thing in the same sense. Or D. The contract must be in writing. What's the correct answer in 132? The rule of consensus ad idem means what? देखो, consensus ad idem is not related to free consent. Rather, consensus ad idem is only related to the concept of consent. और consent का मतलब क्या है? Agreement upon the same thing in the same sense. And therefore, correct answer over here was option C. That is, both the parties must agree on the same thing in the same sense. Okay? So the correct answer over here was option C. Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statements is true regarding past consideration under the Indian law? Which of the following is true regarding past consideration under the Indian law? A. It is no consideration. B. It is a valid consideration. C. It is only valid in written contracts. Or D. It applies only in void agreements. What's the correct answer in 133? Hanji. The correct answer is option B. Correct, beta. It is a valid consideration in the eyes of law. जब इंग्लिश लॉ की बात करते हैं ना हम, तो ये चीज याद रखना, इंग्लिश लॉ does not consider past consideration as a valid form of consideration. ठीक है? इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानता है. ठीक है? बट इंडियन लॉ में हम पास्ट कंसिडरेशन को भी वैलिड कंसिडरेशन की कैटेगरी में ही रखते हैं. ठीक है? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कैन एन ऑफर बी रिवोक्ड? एक ऑफर किस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिवोक किया जा सकता है? व्हेन कैन एन ऑफर बी रिवोक्ड? ए. आफ्टर एक्सेप्टेंस. B. Before acceptance but only after communication. C. Before acceptance is communicated. Or D. At any time even after the contract is formed. हाँ जी, तो ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है भाई? ऑफर कैन बी रिवोक्ड
देखो मच अप्रोप्रिएट आंसर टेक्निकल सेंस में विल स्टिल रिमेन एज ऑप्शन सी बेटा, ठीक है। टेक्निकल सेंस में द करेक्ट आंसर विल ऑलवेज रिमेन ऑप्शन सी। एंड कॉन्ट्रैक्ट के पैसेजेस के लिए जब तक तुम्हें टेक्निकली मोस्ट साउंड ऑप्शन ना मिले, उसके अलावा किसी चीज को चूज नहीं करना है। If you have the most technically correct answer with respect to a law of contracts question, just go ahead with that. भले ही दूसरा कितना क्यों तुम्हें tempting ना लगे, ठीक है। So the correct answer over here was option C. चलो, let's move to the next one. Now, the next question is, coercion under the Indian Contract Act includes which of the following? Coercion under Indian Contract Act includes which of the following? A. Threat to commit crime. B. Undue influence. C. Misrepresentation. Or D. Fraudulent silence. Coercion under the Indian Contract Act includes करेक्ट। कोर्जन क्या है? कोर्जन की डेफिनेशन ही दी गई है ना, इट इज एक्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by IPC. Yes or no? This is the basic definition of coercion. It is given under the Indian Contract Act. So therefore, correct answer was threat to commit a crime. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following agreements is expressly declared void under the Indian Contract Act 1872? Which of the following agreement is expressly declared void under the Indian Contract Act 1872? A. Agreement with a minor. B. Agreement in restraint of legal proceedings. C. Agreement with an alien enemy. Or D. Agreement for the sale of property. कौन सा agreement expressly declared void है? Expressly declared void की कैटेगरी में बेटा जिन agreements को अपन रखते हैं ना, those agreements include agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of legal proceedings, agreement in restraint of trade, wagering agreement, agreements which are uncertain, so on and so forth, है ना। इनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करके रखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। अग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जो अग्रीमेंट्स है, yes or no? And therefore correct answer over here was option B, that is agreement in restraint of legal proceedings. ठीक है, is something it is expressly declared void by law. ठीक है, चलो let's move to the next one. Now the next question is, which of the following contract is voidable? Which of the following contracts is voidable? A contract with a minor. B, a contract made under undue influence. C, a contract for an illegal object. D, a contract in restraint of marriage. What's the correct answer? Which of the following contracts is voidable? The correct answer is a contract made under undue influence. This is void. This is void. This is expressly declared as void. तो ये तीनों तो void ही है ना। सिर्फ contract which is made under undue influence is something it is voidable in nature. ठीक है, चल let's move to the next one. Now the next question is, quantum meruit means what? Quantum meruit means what? A, as much as is earned. B, a claim for damages. C, a contract made under mistake. Or D, a contract void ab initio. What's the correct answer? Quantum meruit means what? It's a kind of a remedy. Remedy के टाइम पे इसको यूटिलाइज किया जाता है in cases of contracts. And quantum meruit basically means beta as much as is earned.
मेरा और आपका 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने उसमें से अभी तक 50 रुपए का काम आपको करके दे दिया है, बट कॉन्ट्रैक्ट अब हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अब हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कोर्ट मुझे डैमेजेस प्रोवाइड करते वक्त क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, दैट एज मच एज वर्क आई हैव डन, उसका तो मुझे पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बस बेटा 10 मिनट 10 क्वेश्चंस और हम बस सॉल्व कर रहे हैं, बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना उनको कल और परसों की क्लास में हम खत्म कर लेंगे। कल भी मैं एक सेशन अलाइन करा दूंगा, उस सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ which of the following is an essential condition for a contract to be valid contract of indemnity? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि which of the following condition is an essential condition for a contract to be a valid contract of indemnity? A, there must be two or more parties. B, there must be consideration. C, there must be a promise to compensate for loss. D, it must be in writing. What's the correct answer? Which of the following is an essential condition for a valid for a contract to be a valid contract of indemnity? इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? दैट इज करेक्ट, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर सम काइंड ऑफ लॉस। लॉसेस को कॉम्पनसेट करने वाले जो प्रोमिसेस होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें दो पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं, वन इज इंडेमनिफायर एंड द अदर वन इज इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर वो पर्सन है जिसने प्रॉमिस किया है लॉसेस को कवर करने का, और इंडेमनिटी होल्डर वो पर्सन है जिसको वो प्रॉमिस दिया गया। ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? A, a contract between two parties cannot impose obligations on a third party. B, a contract can be enforced by anyone. C, a contract must be in writing. D, a contract is always void if it involves multiple parties. Hanji, what's the correct answer? What is contract or what is privity of contract? So privity of contract basically means contract is a private matter between two parties. That is, no contract can confer rights or impose obligation on any person other than the parties to the contract. कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्सन पे राइट्स और ऑब्लिगेशंस इंपोज नहीं कर सकता, एंड दैट इज समथिंग इट इज कवर्ड अंडर आवर ऑप्शन ए, दैट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज which cannot impose obligation on any third person. ठीक है, चलिए let's move to the next one. Now the next question is, a wagering agreement is A, void, B, valid but unenforceable, C, voidable at the option of one party, and D, illegal. What's the correct answer? In question number 141, the correct answer is wagering agreement is it's not voidable beta. वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइडेबल थोड़ी ना। वेजरिंग अग्रीमेंट कौन सा अग्रीमेंट है? वेजरिंग अग्रीमेंट आर बेसिकली दोज अग्रीमेंट जिनको हम बेटिंग कहते हैं। शर्त लगाने वाले अग्रीमेंट वैलिड होते हैं क्या? शर्त लगाने वाले अग्रीमेंट वैलिड थोड़ी ना होते। दीज आर समथिंग जस्ट कंसिडर्ड एज वॉइड, है ना। कीन बेटा देख, ऑलरेडी लीगल एज ने रैंक प्रेडिक्टर अपना लॉन्च करके रखा हुआ, आराम से वहां पे अपना स्कोर डाल, पूरे प्रॉपर टेक्निकल सेंस में जितना भी डेटा है सारी चीजों को एनालाइज करते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल आपका रिजल्ट मिल पा रहा होगा वो आपको दिख जाएगा वहां पे। इतना की लोड लेना है ना। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन? Which section of the Indian Contract Act defines consideration? A, Section 2A, B, Section 2D, C, Section 10, and D, Section 25. What's the correct answer? 6-7 क्वेश्चंस और करेंगे बेटा बस अपन दिवाकर। ठीक है, परेशान मत हो। मैं तो सोच रहा हूँ तुम लोगों को 4-5 घंटे बिठा के रखूंगा आज। तुम लोग तो इतने भी थोड़ा सा थक से गए हो। टोटल 300 आज नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, बस 5-6 क्वेश्चंस अपन और करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस मैं कल और परसों के सेक्शन में अलाइन करवा लूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? जल्दी से बताइए भाई। कंसिडरेशन इज समथिंग इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 10 नहीं बेटा,
2D. Section 2D of the Indian Contract Act gives us the definition of consideration. Okay? Chalo, let's come to the next one. Next one is a contract without consideration is valid under which of the following circumstances? Okay? A contract without consideration is valid. बिठा दो अब मेरा मन नहीं है ना we'll do it in two shift पहले क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि 2.5-3 घंटे में 300 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे बट मेरा वो कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ था ठीक है तो बचे हुए क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे नहीं बैठे आज नहीं बैठेंगे मन नहीं आज मेरा ठीक है हाँ जी so a contract without consideration is valid under which of the following circumstances? A if made with love and affection, B if made by a minor, C if made orally, or D if made without free consent. So the correct answer is that if made out of love and affection. Because written and registered agreement made out of love and affection between close family members is something which is enforceable. Okay? Is something which is enforceable without the presence of consideration over there. Okay? Chal, let's move to the next one. Now, the next question is, which of the following statement is not true about contingent contract? Which of the following statements is not true about contingent contract? A, it depends on the occurrence or non-occurrence of an uncertain future event. B, it is enforceable by law only after the event takes place. C, it is void ab initio. And D, it is defined under Section 31 of the Indian Contract Act. Anji, what's the correct answer? Which of the following is not true about contingent contract? The correct answer is the incorrect statement with respect to contingent contract is option D, that is these contracts are not void ab initio. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये इनकी बस परफॉर्मेंस एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वाज ऑप्शन सी ठीक है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ quasi contract is a contract A created by the agreement of the parties, B imposed by law to prevent unjust enrichment, C, that must be in writing, and D, that is always voidable. What's the correct answer? A quasi contract or a quasi contract is a contract which is हाँ जी क्या करेक्ट आंसर है भाई 145th में these are not voidable beta they are not required to be in writing they are not created by the agreement between the parties वरना फिर हम इन्हें quasi contract कहते ही क्यों so the correct answer is option B that these are imposed by law to prevent unjust enrichment of one of the parties at the expense of the other है ना so the correct answer over here was option B चलो let's move to the next one now a contract is discharged by novation. A contract is discharged by novation when A, the contract is breached by one party, B, a new contract is substituted in place of the old one, C, the contract is rescinded by mutual agreement, or D, the contract is performed. So a contract is considered to be discharged by novation, ठीक है, when, बताइए. What's the correct answer in 146? Anji, the correct answer is a contract is discharged by novation when correct. A new contract is substituted in place of an old one. पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह जब नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए पार्टीज अपने म्यूचुअल अग्रीमेंट से उस तरीके के डिस्चार्ज के मैकेनिज्म या वे को हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय नोवेशन ठीक है so the correct answer over here was option B chalo let's move to the next one now the next question is what is the limitation period for filing a suit for breach of contract under the Limitation Act of 1963 what is the limitation period for filing a suit for breach of contract under the Limitation Act of 1963 A 1 year B 3 years C 5 years and D 10 years 1, 3, 5, 10
व्हाट्स द करेक्ट आंसर गाइस इन 147? क्या करेक्ट आंसर है भाई? So the correct answer is correct. Correct. The limitation period which is given under the Limitation Act of 1963 for filing a case of breach of contract is a period of 3 years. Okay? Chal. Let's move to the next one. Now, a contract in which one party promises to compensate another for loss suffered due to the conduct of a third party is known as a contract in which one party promises to compensate another for loss suffered due to the conduct of a third party is known as A. Contract of indemnity, B. Contract of guarantee, C. Contract quasi contract, and D. Contingent contract. What's the correct answer? This still remains as a contract of indemnity, beta. अगर यहां पर प्रॉमिस टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन लिखा होता, ठीक है, यहां पर अगर प्रॉमिस लिखा होता ना कि प्रॉमिस टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनता. बट प्रॉमिस इज टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस सफर्ड ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी है, दैट स्टिल रिमेन्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो जब तक प्रॉमिस इस नेचर में ना जाए ना कि देयर इज अ प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा. ठीक है. So the correct answer in question number 148 was option A, that it is contract of indemnity. ठीक है. चलो, let's look at the last question of the day. ठीक है. आखिरी क्वेश्चन देखते हैं भाई. ठीक, बाकी के क्वेश्चंस अभी एंड में अपन डिस्कस कर लेंगे. कल या परसों एक और सेशन में रख दूंगा, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे. Now, the last question is an agreement to agree in the future is an agreement to agree in the future is A valid contract, B, an enforceable contract, C, void, or D, voidable. What's the correct answer? An agreement to agree in the future is void, beta. An agreement to agree in the future is void. मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं 2 साल बाद अपना घर बेचने के लिए तुम्हें तैयार हो जाऊंगा. 2 साल बाद हम कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे आपस में टू सेल द हाउस. The agreement is to agree in the future. That's not a valid contract. That is something it is considered as void. ठीक है. ये ऐसी चीज होती है जिसको void ही रखा जाता है. Clear? Everyone? Clear भाई? चल. So आज के सेशन के लिए इतना ही. ठीक है. आज के सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चंस. बाकी के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस कल. किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेशन अलाइन हो जाएगा. कमेंट सेक्शन में थोड़ी देर बाद आपको सेशन की टाइमिंग पता चल जाएगी. ठीक है. कमेंट सेक्शन में थोड़ी टाइम के बाद आपको कल के लिए टाइमिंग क्लियर कर देंगे. अदर देन दैट इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अदर देन दैट इफ यू हैव पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो बाकी की रिक्वायरमेंट आप लोग अपना आराम से हमें बता सकते हो. ठीक है. कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर देना जो भी आप लोगों की स्लैट के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी. विल कम अप विद अ सेशन रिगार्डिंग दैट एज वेल. ठीक. रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखो अपना, आराम से पढ़ाई करो. ठीक है. बाकी जल्दी दूसरे सेशन में मिलते हैं. ठीक. चल. थैंक यू सो मच एवरीवन. बेटा आज या कल में आ जाना चाहिए, कल तक आ जाना चाहिए. एज पर एज बाहर जिस हिसाब से न्यूज है या इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था उसके हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली द रिजल्ट विल बी आउट बाय टुमारो मॉर्निंग. So just take care of yourself, enjoy your day, keep studying. And session में मजा आया तो do like the session as well and let me know in the comment section. AR का सेशन बेटा रात में 8 बजे के लिए अलाइंड है, तो आप लोगों का AR का जो भी है वो रात में 8 बजे मुकेश सर आएंगे एंड he'll take a session for you guys. ठीक है. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो एंड we'll meet soon. ठीक है. चलो. Thank you so much everyone. Thank you so much guys. Thank you.